सम्मानीय मंच, साथियों, सुप्रभात, नमस्कार। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही है शोभा घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। बेटी बहू कभी मां बनकर सभी दुखों को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। नारी शक्ति के सम्मान में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सम्मानीय मंच का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अभ्यागता है श्रीमती अनु गर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा में गुरुतर दायित्व निभा रही है अपनी वो। और मैं सबसे पहले सम्मानीय मंच को आमंत्रित करूंगा दीप प्रज्वलन हेतु। दीप प्रज्वलन के साथ ही किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदां दीपं ज्योति नमोस्तुते, दीपं ज्योति नमोस्तुते, दीपं ज्योति नमोस्तुते। धन्यवाद। दीप प्रज्वलन इस बात का प्रतीक होता है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, सभी संकीर्णताओं को त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। और आज के इस विशेष दिवस के अवसर पर पुरुष जाति भी है जो मन में संकीर्णताएं लेकर बढ़ते हैं, वो भी अपनी संकीर्णताओं को त्यागते हुए नारी के व्यापक दृष्टि से देखें, उनके प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करें। आज की मुख्य कथा का परिचय देने के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर K.V.NO. मिश्रा जी। Very good morning to one and all present here. At the very outset, I would like to extend my warm welcomes to all of you on International Women's Day. दस पुत्र समकन्या, दस पुत्रन प्रवर्धय, यत्र फलं लभते मध्यस्थलभ्यं कन्यायिका, means one daughter is like 10 sons. The result of the upbringing of 10 sons is achieved only by the nurturing of the girls. We are fortunate enough to have amongst us a proud girl of this country who has obtained Odisha Cadre IAS in the year 1991. You will be again feel proud. She was the student of Kendriya Vidyalaya, Maligaon. She is no other than Srimati ANU GARG. And just I am giving a brief introduction of her, but no words can express her achievement. She was an outstanding student and she is an outstanding administrator. And for your information, again I would like to point out, and you will feel proud, that she was the topper in each and every examination. She was the merit certificate holder from CBSE. She was the topper of K.V.NO.1 in science stream in the year 1986. She was a proud alumni of Lady Shriram College and with psychology honors. And then she also has submitted a thesis under and from Utkal University she completed in sociology.
Then she had joined in USA in Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, USA from 2002 to 2007 and 2006 to 7. During that period, she was again the highest CGPA holder, 3.87 out of 4. And this is not the end of her story also. Again, you shall see, in 1991, she was topper among all the women candidates in Indian civil service in the year 1991. So it makes a big effort from our side. And we the teachers will feel proud when one of our students is achieving such glory. And then she obtained Odisha cadre. Again, we are fortunate from Odisha, are especially fortunate to have ANU GARG madam with us. And she was a few minutes before telling, I am now in Odisha. This is the feeling I am talking about. And she was posted in Bhavanipatna, and I am fortunate enough when she was in Bhavanipatna in SDM. At the time, I was in the social organization, Bengal Service Society, Terraces Homes India Society. And then in the meantime, she joined in Jharsuguda, then she was the collector of Sambalpur and Bargad. Then she was deputed to central government, where she was the director of finance, national ex control organization, director of administration vigilance, and then she returned back to Odisha and commissioned from secretary health department, health and family welfare. Then government of India, again she had gone. She was the joint secretary, minister of textiles, and returned back to Odisha once again in 2012. And from there, she is the principal. She was the principal secretary, women and child development, principal secretary, labor and ESI, and now from August 2017, once again congratulations, madam. From August 2017, you are additional chief secretary, water resources. And if I shall speak about her achievements, awards, she was the participant congeniality award by Korea Development Institute during phase 4, 2010. John C. Hume Scholarship for Academic Excellence from Hopkins University, topper among women candidates civil services, gold medal for the best student psychology in Delhi University, and already I have told you CBSE merit certificate holder. So we are fortunate enough, madam, as you have given your consent to be amongst us, at least on this auspicious day, because we believe that in India, the gender bias which is there, that's why the UN activities break the bias, and gender equality today for sustainable tomorrow. It is the right thing. I think what I firmly believe in this male chauvinistic society, we need something to do some extraordinary. And the people like you, people like madam, then definitely can break that bias. So without wasting much time, may I now request our honorable principal sir to formally welcome our guest of this morning, Madam ANU GARG and Madam Y. Padmini. Principal sir, please. Thank you, sir. यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है, वहां पर ईश्वर का निवास होता है, ऐसा हमारे वेद मानते हैं। हम जानते हैं ये बातें काफी हद तक 2022 में किताबों में ही है। ये ग्राउंड में कैसे आएंगे हम कह नहीं सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर हमारी पेरेंटिंग ठीक हो, हमारी टीचिंग ठीक हो, तो निश्चित रूप से वक्त बदलेगा, बदलाव होगा और हम सभी उस बदलाव के साक्षी बने करेंगे। आज हमारे बीच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैडम ANU GARG उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में, और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे एक्स वाइस प्रिंसिपल मैडम एंड ऑफिशिएटिंग इंचार्ज मिसेस वाई पद्मिनी भी मौजूद है। आप दोनों लोगों का हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद इस बात का कि चूंकि आप स्वयं में प्रेरणा रही है और मैडम ANU GARG ने तो जीवन का एक लंबा सफर प्रशासनिक अनुभवों में तय किया है। जैसा कि सर ने अभी पूरा डिटेल में बताया, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है एक मानव जीवन में। हर व्यक्ति को मौका मिलता है, उस मौके को सही तरीके से सही परिस्थितियों में ढाल के जो इतिहास बनाता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। हम सभी टीचर्स हैं और हमारी एक कामना है कि हमारे देश के इतिहास में
इस समय जो हमारा लिटरेसी रेट है 72%, 74% जो भी है ऑन रिकॉर्ड 2011 की जनगणना जो कहती है, मुझे उम्मीद है जब 2021 की जनगणना के रिजल्ट आएंगे तो हमारा लिटरेसी रेट और भी बेहतर होगा और केरल की तरह हम उन कीर्तिमानों को छू पाएंगे जिसमें महिलाएं सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैडम अनु गर्ग और मैडम पद्मिनी का अपने विद्यालय प्रांगण में मैं बहुत 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 अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। स्थानीय परंपरा के अनुसार से उत्तरी द्वारा आज के मुख्य अतिथि मैडम थोड़ा सामने से कहीं का अभिनंदन। मैडम मैडम हरित स्वागत। साथ ही हमारे मध्य उपस्थित विशिष्ट अध्यापक श्रीमती वाई पद्मिनी महोदय, उत्तरी से स्वागत श्रीमती प्रणति महोदय, प्राचार्य महोदय के द्वारा हरित स्वागत। धन्यवाद। संगीत के बिना हमारा जीवन अधूरा है और संगीत एक बृहद अर्थ लिए हुए है जिसमें गीत और नृत्य दोनों आते हैं और इस कार्यक्रम को सरस और मनोरंजक बनाने के लिए एकल नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मैं छात्रा को आमंत्रित करता हूँ कि वे एकल नृत्य के द्वारा अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करें, साथ ही हम सभी का मनोरंजन करें।
there is no chance for the world. Hello? Hello? There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. May I now request G.P. Dasta to help in honoring all the ladies of this Vidyalaya. Hello. A whole generation worked to empower women, but forgot to teach men how to love with the empowered women. Dear friends, madam, the teachers, these are considered the nation builders. They are multidimensional in their activities, in their approach, and we are proud to have some of our teachers, those who are not only teaching in the class, not only helping in the teaching learning process, they are also multidimensional. And then I request our friend under the Rina to present a group song. Rina Madam and her team, please.
नारी सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष रूप। सभागार में शिक्षिकाओं की संख्या देखकर भी पता चल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने में भारतीय महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। जैसा कि गीत में आपने नारी शक्ति द्वारा आह्वान जो है वह भाव आपने सुना, मुक्ति की आकांक्षा, स्वतंत्र आकाश में उड़ने की आकांक्षा। और इसी बात को बहुत पहले हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी कहा था, मुक्त करो नारी, मानव मुक्त करो नारी को, चिर बंदिनी नारी। और आज हम प्रत्यक्ष रूप में पा रहे हैं कि अब मुक्त आकाश में नारी स्वच्छंद रूप से उड़ रही हैं और वह नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही है। नारी सीता, नारी मां काली, नारी ही स्नेह प्रेम करने वाली, नारी कोमल, नारी कठोर, नारी बिन नर का कहां छोर। जीवन को आगे बढ़ाने में, सृष्टि को आगे बढ़ाने में नारी शक्ति का भूतपूर्व योगदान रहा है। हमारे हिंदू धर्म में इसीलिए अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गई है कि ईश्वर भी अपने आप में पूर्ण नहीं है जब तक कि उसमें पुरुषत्व और नारीत्व दोनों का सम्मिश्रण न हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आ रही हैं हमारे विद्यालय की छात्रा सौम्या श्रीमयी पंडा, कक्षा 11वीं तक छात्रा। A very cheerful and happy morning to everyone present over here. Esteemed guests, respected principal sir, teachers, and all the incredibly beautiful women. This is Soumya Srimay from class 11D. I would like to say a few words on the occasion of International Women's Day. The famous English poet John Dryden observes, errors like straws upon the surface flow. He that would search for pearls must die below. The above observation made by the famous English poet John Dryden tells that one will be grossly mistaken if one judges another at the surface level. As the surface level of the ocean only contains mere straws or dry bits, one will terribly fail to measure the worth of the ocean observing the surface level. Rather, one has to dive to the bottom level of the ocean in order to measure the worth observing the bottom of the ocean. Exactly same has been the case of the women. Yes, of the women. In a male-dominated society where women were traditionally considered as the weaker race, supposed to play the role of the second fiddle, confining themselves to the four walls of the house. Reflecting the societal norms for women in Victorian society, the eminent poet Lord Tennyson writes, men for the field, women for the hearth. Men for the sword, for the needle sheath. Men with the head, women with the heart. Men to command, women to obey, all else confusion. But this very traditional notion of hailing women to be the weaker race has been falsified in 21st century, as women have proven their mettle in various fields. Gone are the days when women were destined to play the role of second fiddle, and today there is no field left where women do not assert their supremacy. Today, women are privileged enough to prove their mettle in various fields like law, administration, education, health, social affairs, etc. Even women have been able to prove themselves. And today they can fly the fighter planes hurling a jeep at them who consider them to be the weaker race. Moreover, women prove themselves as skilled professionals without hampering their domestic service considered to be their primary work. At home, they neatly perform the duty of a good mother, a daughter, a sister, etc., justifying the adage that if a woman gets educated, an entire generation is able to get educated. Today, the society has realized the importance of women, and hence the word women's empowerment has become a buzzword.
Today, the society has realized the importance of women and hence it observes 8th of March as the International Day for the Women. Therefore, it can be said, women have the potential to bring about a revolutionary change in the globe. Yes, women have the potential and the power to bring about a revolutionary change in the entire globe. Therefore, it has been rightly said, the hand that rocks the cradle, the hand that rocks the cradle rules the world. Thank you and have a nice day. Thank you, Soumya, for a beautiful speech, and it is indicating how conscious you are, and I hope one day you will bring laurels to your family, to your school, and you will make us proud also. Thank you, and our blessings is with you. Women's freedom is the sign of social freedom. I never dreamt about success, I worked for it. This is the statement of one of our colleagues, Sabita Huda Madam. May I now request Sabita Huda Madam to present a small poem which has been written by her. And for your information, she is a multidimensional teacher also, though she is of Sanskrit, but she used to write in different languages. May I now request Sabita Huda Madam, please. धन्यवाद. सर्वेभ्यो नमो नमः. With due respect, Honorable Ma'am, guest of the occasion, respected Principal Sir, respected Principal Madam, dignitaries, and my dear and very near women, pretty women, उपस्थित महिलाओं को महिला दिवस की पावन अवसर पर सत सत नमन, सज्जनों को प्रणाम. जैसे सार ये वक्तव्य था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होती है, सभी को ज्ञात है, सर्वविदित है. नारी एक ऐसी कड़ी है समाज की, उसके बिना किसी की स्थिति असंभव है. महिला दिवस के परिकल्पना गुण, गारिमा और महिमा को बताने के लिए नहीं है. यह कहने और कथन में केवल सीमित नहीं है. हर पल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन परिवार में, समाज में और विश्व निर्माण में नारी अपनी महिमा को प्रमाणित करती आती है. इस संदर्भ में मैं कहूंगी, woman is the largest untapped potential in the world. Every woman is competent enough, is courageous enough to write her own destiny, to make the world a better and safer place to live in. Let us continue to celebrate womanhood for a better tomorrow for our next generation. If you want to empower the underprivileged, then just educate women. If you want to strengthen our country, strengthen your country, all of us should focus. Just you believe the strength of women who live in it. I believe womanhood is the symbol of power. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Sanstita. If we do not appreciate this, we are only switching off the power plug, the power flow, inviting darkness, nothing else. मातृभाषा में चंद शब्द कहना चाहूंगी. मो निज लेखा नारीर गुण और गारिमा महिमा को वर्णना करी विभिन्न चरित्र रे, भिन्न अवतार रे नारीर जो अवदान योगदान समाज और राष्ट्र प्रति रही तारी आधार रे मो निज लिखित आद्या नामक कविता पुस्तक रु किछि पंक्ति बाढ़ी. सलिता से जली आलुओ बिछाए दरब दिए चिन्हाई अंतर कोहकु
बुझी पदे पदे देई चाले श्रद्धा छाई अकुहा दरद अदेखा डर से चाली थाए मथा पिटी नीरव नीरता सेई कर्मसिक्ता देई चाले प्रेम बांटी अविश्रांत धारा कर्तव्य डाकरा होई थाए गलाहार कषण समस्त हुए आभूषण निजर हुई पर असजड़ा सबु स्थिति को निरेखी सजाई दिए पसरा जीवन जानर मंग को बुलाए सूचिमती से प्रखरा सूचिमती से प्रखरा दंडे मात्र हेला नथाए केउठी परिव्याप्त जार कर्म सोदर बांधव सभिंकर अली मुंडाइबा तार धर्म सुख अनुभव देई चली थाए कार्य करी परिपूर्ण मन और शरीर जहाँ भी लोड़ती अकातरे करे पूर्ण संदेह सठता निंदा क्रोध घृणा सर्प विकार दूरेई बिंची चाले क्षमा शांति ज्योति प्रीति मैत्री भाव आपणे अन्य नाम तार त्याग अटे जार मनोभाव ही विशाल अनन्या से नाम तार समर्पण गभीरताटी अथल समय को चाही महाकाली रूपे अवतरे से सतत भद्रकाली रक्षाकाली साजी सीए घोड़ाए न्याय पणत मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ मंत्र को ध्याई ललना संसार मंचरे नायिका रूपरे झटकू थाए सुमना रमणी से सुशोभना अकलनीय महिमा धैर्य वीर्य तेज परखरे कांचन भी पड़े उणा सुखरे दुखरे महासंकटरे घोड़ाई थाए ओढ़ना महिमा गारिमा रिद्धिमा जे राति आकाशरे से पूर्णिमा परिस्थिति भारी कौशले करे सुस्थ जीवन कल्पना सुंदर विचार प्रशस्त प्रखर अटई प्रतिटी कर्म शुचिमंत भाव नहीं टाणी चाले आस्था तार एका धर्म नीचता कटुता संदेह सठता आड़ी चाले आगकू चेष्टा करी चाले जीवनर युद्धटीकू लड़ी जीतिबाकू उत्थान पतन जन्म मरण सबू जानी स्थित प्रज्ञा तपस्विनी सीए महाजोगिनी जे अबोध्य ताहार संज्ञा सहधर्मिणी से सहकर्मिणी से निरंतर करे त्याग प्रेरणार उत्स विश्वासर साथी बढ़ाए कुलर भाग्य भामिनी कामिनी स्निग्धा विलासिनी व्रत तार परा सेवा सभिंकर ऊर्जा रवि प्रभा परी फलप्रसू वरप्रदा एंतुड़ी शालरू निज जुई जाए प्रसारे तार महक संसार आधार योग्या कर्णधार महिमा तार अनेक। इतिहास कहता है आदि मानव के युग से नारी जले हुए आग को बांधकर पके हुए खाना परोसकर परिवार और घर की निर्माण करती आ रही है। इस संदर्भ में कहना चाहूंगी भिन्न भिन्न अवतारे से आद्या से साम्राज्ञी से अपराजिता से सतनामा से सर्वंसहा से रागिणी से आश्रा से जोग्या जोसा से लावण्यमयी से मोहिनी से सस्मिता से सरिता से ही सीता माता दुहिता सुचरिता साक्षात सविता। The nation cannot exist without the participation and support of women. नारी के बिना नर की स्थिति असंभव है। शेषरे कही रखिबी ईश्वरंक कृत विचित्र संसारे नर रूपी नारी श्रेष्ठ नर रूपी नारी श्रेष्ठ। सभी नारियों के लिए कल्याण कामना करते हुए सभी को बधाई देते हुए सज्जनों को प्रणाम करते हुए मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद महोदय, आपने त्रिभाषा के प्रति अपने ज्ञान को भी प्रदर्शित किया है इस कविता पाठ के साथ साथ। निसंदेह नारी का समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसकी पीड़ाएं भी हैं। पीड़ा संबंधित कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। एक नारी की पीड़ा क्या होती है। दिन की रोशनी ख्वाब बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाब बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं,
जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। नारी की महत्ता हम सभी जानते हैं, पर उसके अंतर पीड़ा को एक नारी ही अच्छे से समझ पाती है। संभवतः हम पुरुष वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं, नारी के अंतर्मन को पूरी तरह से झांक नहीं पाते हैं। कुछ कवि हृदय हैं, वही इस नारी हृदय और उनकी महिमा को विशिष्ट रूप से समझ पाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कामयानी में लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इन 4 पंक्तियों में प्रसाद जी ने नारी की समस्त महिमा को सार रूप में प्रकट कर दिया है। आज के इस अवसर पर हमारे मध्य विशिष्ट अभ्यागता के रूप में उपस्थित हैं श्रीमती वाई पद्मिनी महोदय। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर अपनी भावाभिव्यक्ति करें। महोदय। तो जाना पड़ेगा। सबको नमस्कार। ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ द डे मैडम अनु गर्ग IAS, एस्टीम्ड प्रिंसिपल K.V.No.1 श्री भूपेंद्र सिंह जी, स्टाफ मेंबर्स ऑफ K.V.No.1, wish you all a very happy Women's Day. First of all, I would like to thank Bhupendra Singh sir for inviting me on this auspicious day. Thank you, sir. And we know this year's theme of International Women's Day is gender equality today for a sustainable tomorrow. And every woman's success should be an inspiration to one another. We see in front of us today our honorable chief guest ma'am, Anu Garg ma'am, is a great inspiration to all of us. एक बार जोर से तालियां बजाइए। ये she is a great inspiration to all of us. Her achievement will inspire each one of us, all the ladies, all the gents, each and every one. And she is from KV. Proud to say that Madam is from KV. बहुत अच्छा लगा। Wherever there is a woman, there is a magic. And things are done in a magical way, majestic way in presence of women. I thank the Almighty for making me a woman. कोई अच्छे कर्म किए हैं जो आज मैं एक नारी हूं। There is no limit what a woman as a woman can accomplish. No limit at all. The International Women's Day is a global day celebrating the social, economic, cultural, political achievements of women. It's a civil awareness day. We celebrate their contributions to the society. So this is a day of celebrations of success of women. Great women in the past also inspire us, like Ahilya Bai. You must have heard in the history, Ahilya Bai. She did so much for the women, for the widow, and upliftment of women at that time when there was full of dominance, male dominant time. And Rani Lakshmi Bai. In those days, women were not allowed to come out of their houses because of the male dominance. Still then, they could do much for the woman in those times. Now things have changed. Women, girls are free to go with their good thoughts and aspirations. Freedom is there, but still women are afraid to move out. Still women, do you agree with me? Yes. इतनी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए हर कोई डरता है. In the odd hours, generally in the odd hours, women are afraid to move for their job or for any essential work. Still a question mark when this change is going to come.
जब हर लड़की, हर औरत बाहर किसी भी वक्त पे अपने काम से जाए, बिल्कुल बेधड़क होकर के जाना चाहिए, बिना डर के जाना चाहिए। वो दिन की हम कामना करते हैं एंड हेंस वी नीड टू सेलिब्रेट, वी स्टिल नीड टू सेलिब्रेट दिस वुमेन्स डे एवरी ईयर। आई शुड से एवरी डे हमारे मन में होना चाहिए, यस हम वुमेन है और हमें आगे बढ़ना है। सो स्टिल देयर इज लॉट्स टू अचीव फॉर वुमेन एंड हेंस gender equality for sustainable tomorrow. So let us celebrate the success of women every time and every year. Proud to be a woman. Jai Nari Shakti. Thank you. धन्यवाद महोदय। आपने अपने मन की भावनाएं हैं बहुत संक्षेप में एक वाक्य से ही आपने पूरी तरह से आपने प्रकट कर दी कि आपको नारी होने पर गर्व है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद भी आपने ज्ञापित किया और निसंदेह आने वाले समय में इस तरह से महिला दिवस इत्यादि मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सभी नागरिक जो महिलाएं जागरूक हो रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख रही हैं। कक्षा 10वीं में बहुत छोटी सी बहुत अच्छी कविता है ऋतुराज के द्वारा रचित, उसकी अंतिम पंक्तियां बड़ी मर्मस्पर्शी हैं, जिसमें एक माँ है अपनी विदा होती बेटी को कह रही है, बहुत सारी सीख देती है और अंत में कहती है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बड़ा गहरा अर्थ है इसका। लड़की होना मतलब लड़कियों में जो कोमलता, ममता, सहनशीलता, ये प्रवृत्तियां होती हैं वो अंदर ही अंदर रखना, पर उसे अपनी कमजोरी मत बनने देना, ताकि दूसरे शोषण तुम पर करने लगे, तुम पर अत्याचार करने लगे, उस समय कठोर हो। और वो एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, शायद उसकी माँ ने सीख न दी हो, पर आज की महिला जागरूक हो गई है। नारी शक्तिकरण से संबंधित वह कविता बहुत अच्छी कविता है। धन्यवाद महोदय, आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से नारी शक्ति में एक ऊर्जा भरी। संगीत की ओर पुनः चलते हैं और हमारे विद्यालय की जो छात्राएं हैं वह भी प्रतिभाशाली छात्राएं हैं और वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं समूह नृत्य। समूह नृत्य के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा भी प्रदर्शित कर रही हैं, हमारा आप सबको मनोरंजन भी करेंगी। लिंसी सिंह और अर्पिता प्रियदर्शनी दोनों छात्राएं हैं, वह नृत्य प्रदर्शित करने जा रही हैं आप सभी के समक्ष। Krishna
मंदिर में सची बिहारी मन तेरी छवि प्यारी मन मंदिर में सची बिहारी मन तेरी छवि प्यारी बंसी बजैया सजैया हार मेरे तुम ही भैया हमसे बड़ा कहाँ कोई कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे सबके बहुत बढ़िया। मंदिर में सची बिहारी तेरी छवि प्यारी मन मंदिर में सची बिहारी मन तेरी छवि प्यारी बंसी बजैया सजैया हार मेरे तुम ही भैया हमसे बड़ा कहाँ कोई कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नंदन गोविंद हरे सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सबका काफिला श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज
beautiful. It really, they mesmerized us through their dance, the body posture, the facial expression. So hearty thanks to Nancy and Arpita, and may God bless you all. And also thanks to the organizer and the choreographer also. They deserve praise for this. With this, definitely, so Bhargavi, sorry, Divya Mishra, whom we have failed to mention her name, she has presented nicely also. So once again, Divya, Nancy, Arpita and Soumya, on behalf of entire school and on behalf of our chief guest of this morning, so we are showering our blessings, and you arise and arise and arise. So arise, awake and stop not till the goal is reached. Okay? So there is no hope for that family or country where there is no estimation for women. It reminds me, the 5th century playwright writer, Euripides, you must have heard in Greek playwright writer. In contrast to Aristotle, once he pointed out that of all things upon the earth that bleed and grow a herb, most bruised is women. Through this, the writer sensitized the humanity against injustice meted out to women. So, we are fortunate to have amongst us the guest of this morning, who is the main attraction of ours, who already I have told about her. She was an outstanding student as well as an outstanding administrator. So, without our blessings, definitely the program cannot achieve its success. So, from the very from my core of my heart, I extend thanks, and may I now invite Madam ANU GARG to shower blessings on this occasion. Madam, please. Principal, Kendriya Vidyalaya, Mr. Bhupinder Singh, ex-principal, Ms. Padmini Mishra ji, and all the lady teachers present today, and some of the male teachers, the young children. It is such a pleasure for me to be here today. And at the outset, let me first of all congratulate all of you on the occasion of International Women's Day. It is a special day for all of us. And I would like to compliment Divya, Arpita, and Soumya, and Mansi, Lindsay, for a beautiful dance, and Soumya for an excellent speech on Women's Day, wonderful, and for all the teachers who sang such a lovely song. For me, it is very, very sentimental today, very emotional moment, because after a long time, I'm back in Kendriya Vidyalaya. And मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितनी यादें एकदम से ताज़ा हो गई. मैंने सोचा ही नहीं था. इनफैक्ट जैसे ही मैंने एंटर किया और वो एनसीसीज के बच्चे एंड वो स्कूल का परिवेश और फिर वो दीवारों पे लिखे हुए वो कोट्स, इट इज़ सो टिपिकल ऑफ एनी केंद्रीय विद्यालय. एंड उसके बाद इस टाइप के फंक्शन, और फंक्शन में स्पीचेस में जिस तरह से अभी हिंदी के सर बोल रहे थे, मुझे अपने वो वाले दिन सारे याद आ गए. I was in Kendriya Vidyalaya Maligaon, that's in Guwahati, when my father was posted there for 2 years. And उससे पहले बगदाद में भी एक स्कूल होता था, केंद्रीय विद्यालय, and I was there for some time there also. Let me confess, and I have been in convent schools in my schooling. I have been in public schools. I was in Delhi public schools. I was in Loreto Convent, St. Mary's. So wherever my father went, I have been doing my education. And I have been in Kendriya Vidyalaya. But let me tell you, I have found Kendriya Vidyalaya to be the most diverse, most inclusive, most effective, and most egalitarian. And I am saying this not because you are all here, but I genuinely feel that it is such an egalitarian atmosphere
where students study. And the proof is here. You have a principal who is from Kanpur, and you have an ex-principal who speaks Telugu but is living in Odisha and has, so there are Hindi teacher who's from somewhere. So there is so much of diversity, and yet everybody is together. So this is the beauty, friends of Kendriya Vidyalaya, and it has been doing so well at all times. It makes me feel really, really proud. Let me start with a little bit of my journey. From the beginning, I had wanted to be an IAS officer. And in that journey, I give a lot of credit to my late parents, my father and my mother. And I am telling you this because I want to say how much of a role we can play as parents in ensuring the success of our child. From the beginning, my mother, who was a homemaker, a very good homemaker, I will say, always made it very clear that her daughters, my sister and myself and my brother, we will enter the service. And for that, she left no stone unturned. So much so that when you become 20, 21, some old people of the family, they'll come with this boy, marriage, this. My mother used to get angry. This is not the time to talk to her about marriage. Don't even bring up this topic. She has to study, she has to achieve, she has to get into the service. And for us, it was always studies, this achieving something more than anything else. My sister, my brother, myself. And she ensured, she sacrificed so much. That time, even though my father was in a class 1 service, he was in the railways. But you know how a single salary at that time used to be. But she sacrificed so much to ensure that whatever we wanted, you want this magazine, okay. You want to get this coaching, okay. Everything possible to ensure that we achieved what we achieved. And small things like, even before my interview, because I used to look very small at that time. So to make me look big, everyone said she should wear a sari and go for her interview. I had never worn a sari in my life till then. And so she used to tie me up in a sari for 3-4 days before the interview, with a pin here, pin there, everywhere, so that I would, when I go there, I should not look as if I have never worn a sari or feel uncomfortable. Those are the small things. And we as parents, all of us, that faith, that, in the child, more than the child herself, that faith, I think that is what made me whatever I am today. And when I was coming for my first posting to Jharsuguda, for us, Odisha was a totally new place. And nobody had heard where Jharsuguda is. So she was feeling a little apprehensive that I'm going to go all alone. I was 22 years old. And so she said to my father that why don't you tell somebody in the railway colony of Jharsuguda to just keep an eye, look after her. You know what my father said? He said, she is going as the SDM. She will look after everyone. That belief in me, that is what, gave me the confidence. My mother's wishes, my mother's and my father's belief that I, at 22 years, can look after everybody. That is what I feel really gave me the confidence to take on this job. And after that, it was a challenge after challenge after challenge. But it was a wonderful, wonderful journey. And I want to tell everybody, that especially the young girls, that there should be no one to stop you. No one to stop you. It is for you to make your dreams come true. And to all other teachers who are here, to your children, if you give them the faith, the belief that you can, then they will achieve. Women have been achieving so many things. So I will be very, very optimistic that yes, there are a lot of
gaps still, but so many things have also been achieved. We have women in combat now, women in as pilots, women leaders, and in Scandinavian countries, so many presidents, prime ministers, everybody, women. So women have really come a long way. In our own state, we have, I don't know how many of you know, but we have 6 lakh women self-help groups of 10 or 12 women each, who are doing different activities. So I'm not typical कि बड़ी बना दिया, पापड़ बनाया, अचार बनाया. No, some of them may be doing that, but mostly they are doing meter reading, brick kilns, mushroom cultivation, floriculture. So gender stereotypes are being defied. We are breaking the bias. That is the theme this time. We are breaking that bias, and there is a need to break that bias. So a lot of things are being done. We, when I was in WCD, Women and Child Development Department, we started a program for adolescent girls like Soumya. And we are a privileged lot here because you are coming to a good school and good environment, good parenting and all that. But in some of the rural areas, the adolescent girls are nutritionally compromised, health-wise compromised, education-wise compromised. So it was very important to have a campaign. We started a campaign called Advika for adolescent girls empowerment, where we used to call them to Anganwadi centers every week, give them their iron and give them eggs so that their nutrition, their health is taken care of. But we also started a calendar of activities for them on cyberbullying, on menstruation, on topics where there is hesitation maybe, but they should be speaking about it. So we gave them a topic every month. We made 2 girls. One girl was called Sakhi, one was called Saheli. And they were asked to lead the conversation on all these topics which are otherwise considered a little contentious. Then we thought that why only girls? Boys also need to be part of this. So we added a component, Bandhu and Sakha. So the boys were also called. And they were also asked to participate. Because Beti Bachao, Beti Padhao, yes, very important. But Beta Padhao and Beti Bachao is also equally important. We have to sensitize boys from the beginning to ensure that everybody, so that feeling of egalitarianism, the feeling of equality must come from the boys also. Since I'm here in Kendriya Vidyalaya, I was thinking to myself, what is it that we as Kendriya Vidyalaya teachers, what is it that you can contribute to this, to a more egalitarian society? You already are. But some thoughts which came to my mind are that as most of the Kendriya Vidyalaya teachers are part of some research groups, or when the textbooks are being written, my request is at that time, please ensure that those biases which come in the books, those are removed. हमेशा फादर को पेपर पढ़ते हुए दिखाया जाता है, माँ को किचन में दिखाया जाता है, या माँ बच्चे को पकड़े हुए हमेशा घूमेगी और फादर अपना आगे आगे चल रहे हैं. सो इस टाइप की चीजों को देखिए, एक साथ मैं भी जानती हूँ स्वाभाविक है, एक साथ चेंज नहीं आएगा, लेकिन कम से कम जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, in those books, those type of things should go. In fact, there should be positive stories of a woman pilot, of a woman in combat role, these type of things which will be a positive stories for male, boys and girls. I'm not just saying girls. Boys need to be enthused as much as the girls. Another thing I thought is role model. जब भी मैं जब ज्वाइन करी थी सर्विस में, तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं इस टाइप के फंक्शंस में जाती थी एज चीफ गेस्ट, तो छोटी छोटी लड़कियां ऐसे करके दे यूज्ड टू लुक, दे यूज्ड टू बी वेरी
स्टारी आइड, तो मुझे लगता था कि देन आई रियलाइज दैट समवेयर हम लोग रोल मॉडल बन जाते हैं, आप सारे टीचर्स, क्योंकि जितनी लड़कियां क्लास में बैठी होती हैं वो आपको देखती हैं कि ओके इतनी शी इज अ टीचर, आई कैन ऑल्सो बिकम अ टीचर। मेरे को देखती थी तो शी इज एन IAS ऑफिसर, सो आई कैन बी एन IAS ऑफिसर। सो we when realizing that we have that potential as role models, it is important that we should play that role very well. ये अगर हम ही अपनी तरफ से ये दिखाना शुरू कर देंगे कि अरे क्या मैं टीचर हूँ लेकिन मेरा तो ये है घर का काम, दिस दैट, तो वो लड़की उसी तरह से उसको परसीव करना शुरू कर देगी। तो हमारी ड्यूटी बनती है एज रोल मॉडल्स टू शो देम द राइट थिंग। बट मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है जो हमारे सज्जन लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा रोल मॉडल, क्योंकि सारे बॉयज आपको देख रहे हैं एंड अगर आप ही दिखाएंगे कि अरे वो लेडी टीचर है, वो तो आती ही नहीं है, इस टाइप की बातें वो बच्चा भी सुन रहा है। सो वी हैव टू एज मेल टीचर्स also we have to play a very important positive role where we ये नहीं कि अच्छा लड़की है तो उसको साइंस के एक्सपेरिमेंट में साइड में कर दिया, बॉयज को बुला के साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि बॉयज अच्छा करते हैं साइंस में। क्यों भाई? सो आप लड़कियों को भी बुलाइए आगे, ये देखो बेटा इसको इस तरह समझो, ये करो। मैथ्स में लड़कियों को भी बुलाइए, आगे बुलाइए, उनके साथ मैथ्स कीजिए। हर चीज में द मेल टीचर्स अगर ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है बॉयज जो उनको देख रहे हैं बड़े बारीकी से, दे विल रियलाइज दैट। पर अगर वो देखेंगे कि टीचर ही खुद बड़े सेक्सिस्ट टाइप के कमेंट्स मार रहे हैं या बहुत शोविनिज्म दिखा रहे हैं, तो वो लड़का भी उसी तरह का बिहेवियर घर लेके जाएगा। दैट इज माई फीलिंग। कई बार हम लोग ये नहीं रियलाइज करते, जेन्युइनली हम कुछ चीजें इनएडवर्टेंटली कर जाते हैं। जैसे एक स्कूल में मेरी बेटी जब थी, छोटी थी, तो वहां एक पोजीशन थी जो सिर्फ लड़कों को दी जाती थी फॉर सम रीजन, एंड वो मेरे पास आई कि ये पोजीशन हमेशा बॉयज को ही क्यों ऑफर होती है। मेरे को भी नहीं समझ में आई बात, भाई क्यों? फिर उसने खुद ही अपनी उस टीचर से बात की कि आप सबको ऑफर करें, जो भी उसमें वाकई में ठीक है, जिसके अकम्पलिशमेंट्स उस पोजीशन को सूट करते हैं, आप उसको ऑफर करिए। व्हाई ओनली अ बॉय? एंड वो बात उनको भी समझ में आई कि इनएडवर्टेंटली, जैसे कई बार होता है ना कि एक चीज चली आ रही है रस्म की, बॉय को ऑफर करी जाती है तो बॉय। सो इस टाइप की अगर कोई चीज हो रही है, सो वो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको देखें कि वो ना हो। एंड देन जैसे मैं भी कई बार ऑफिस में जाती हूँ, किसी ऑफिस में, सबऑर्डिनेट ऑफिस में, तो वहां पे मैं देखती हूँ कि लेडीज को बोला जाता है कि आप चाय लाइए। तो मैंने कहा भाई व्हाई इज इट? तो बोले कि हमारा वो जो पियोन था वो है नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मेल भी तो है, मतलब इन दैट सेम पोजीशन में अगर आप उनको कर रहे हैं तो वो मेल को भी तो उठाओ, वो तो बैठे, लेकिन लेडी, क्योंकि लेडी को चाय। सो इस टाइप के हम लोग के इनएडवर्टेंट, मैं नहीं कह रही कोई जानबूझ के करता है, बट इनएडवर्टेंटली हम लोग से ये चीजें होती हैं, एंड वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस टाइप ऑफ mistakes, I would say, that we sometimes make, and we should not be making. And finally, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों से एक लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको ठीक बात बताएं। आप लोग को बहुत मौके मिलते हैं ज्ञान बांटने के। So this is the occasion where you have to teach everybody how important it is to be egalitarian. मेरा बेटा जब छोटा था, मैंने उसको बहुत प्यार से सारी बातें ये सब समझाई। मैंने कहा बेटा जब आप बड़े होगे, आपकी क्लास में यू हैव सो मेनी, ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज रिस्पेक्ट। मैंने कहा हो सकता है कि कोई आपके बगल में बच्चा कोई
चीप कमेंट लड़की पे मारे, कुछ करे। मैंने कहा आप ये सब बिल्कुल नहीं, यू हैव टू रिस्पेक्ट द गर्ल्स एंड नो फ्रिवलस कमेंट्स व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, हैव योर फन फॉर अदर थिंग्स, बट लड़की वगैरह इस टाइप की चीज़ों में बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। सो एज पेरेंट्स, as officers, as teachers, as students, all of us have our responsibilities. बहुत चीजें हो रही हैं, पर जो भी रह गया है, I think we all will be doing it. And finally, I would like to again thank the principal and the entire team from Kendriya Vidyalaya to bring me back to Kendriya Vidyalaya with so many good memories. And to all the women, I would like to say that don't think that only one day is yours. Every single day is ours. Thank you. धन्यवाद महोदय, आपने अपने उद्बोधन में सब कुछ सार रूप से कह दिया है कि नारी है बहुत सारी विशेषताओं से भरी हुई है, पुरुष जो सोच है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। वास्तव में मैं आपकी बातें ध्यान से सुन रहा था और मैं आत्मचिंतन भी कर रहा था कि हम वास्तव में पुरुष बहुत सारे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो वो पूर्वाग्रह को तोड़ने की सख्त जरूरत है। और नारी जाति भी वह अपनी शक्ति को पहचान कर निरंतर आगे बढ़ती रहे। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्राचार्य ऊर्जावान प्राचार्य हैं, हमें उनकी ऊर्जा पर बड़ा गर्व है। जिस प्रकार से पूरी टीम को लेकर साथ चलते हुए विद्यालय चला रहे हैं, उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। माननीय प्राचार्य, थैंक यू दुबे सर। लगभग हम अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हैं और अभी हमने सबको सुना, हमारे प्यारे बच्चों का डांस भी देखा, उनकी स्पीच भी सुनी, अपने टीचर्स के भी सॉन्ग को सुना। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर। हमें कभी कभी मौका मिलता है अपने दिल की बात कहने का। हमारे सभी जो उद्घोषक थे वो यहाँ पर आकर के बोले भी, और मैडम ने अभी जो बात कही अपने स्कूल टाइम से लेकर के और अब तक की बात, जो भी उन्होंने महसूस किया, क्योंकि जब हम एक सही पद पर आ जाते हैं तो अपनी हर बात को हर जगह व्यक्त कर पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हमें खुशी है कि मैडम ने इस जगह को अपने जैसा समझा और अपनी वो बातें भी कही जो शायद इन्होंने कभी अपने ऑफिस या उस तरह से स्टाफ में शेयर नहीं की होंगी। रियली थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और जो बातें यहाँ इन्होंने कही, ये हर कोई इन चीजों से गुजरता है, हर कोई गुजरता है। जिसके माँ बाप बच्चे में जीतने का जज्बा भर देते हैं वो जीतता है और इतिहास में अपने नाम को दर्ज करता है, और जिसके माता पिता बच्चे को हर बात में टोकते रहते हैं उस बच्चे को कहीं ना कहीं जा करके आखिरी में उन सब कमियों का सामना करना पड़ता है। वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसके साथ मत बैठना, ये जो नहीं नहीं हम अनजाने में कहते जाते हैं, बाद में वो बच्चे की पर्सनालिटी का परमानेंट हिस्सा बन जाता है। 3 तरह की पर्सनालिटी होती है, हिंदी में कहूं तो दब्बू, दबंग और संतुलित। जो एकदम दब्बू होते हैं, 4 बार घर में मार पड़ती है, 2 बार स्कूल में भी पड़ गई, 3 बार ग्राउंड में भी पड़ गई, वो हमेशा दबे रहते हैं, वो अपनी बात को कभी मजबूती से रख नहीं पाते। दबंग वो होते हैं जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा है ही नहीं, हर किसी को एब्सेंट मान के सिंगल फेम में काम करते हैं। और संतुलित वो होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। जहां जरूरत पड़ती है दब्बू हो जाते हैं, जहां जरूरत पड़ती है दबंग हो जाते हैं, जहां जरूरत पड़ती है लोगों से प्यार से बात करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां गुस्सा भी हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे ही समाज की, अगर हमने एक बेहतरीन समाज की कल्पना की है तो व्यक्तित्व तो ऐसा ही होना चाहिए। हम अपने स्टाफ के साथ लोगों के काम करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हमारा तो एक केंद्रीय विद्यालय है। एज ए प्रिंसिपल मैं काम करता हूं, आप एज ए टीचर काम करते हैं, हम में से हर कोई कहीं ना कहीं तो बॉस होता है। पुलिस में एक सिपाही
घर में बॉस होता है, उसका इंस्पेक्टर थाने का बॉस होता है, जिले का एसपी डिस्ट्रिक्ट का बॉस होता है, और एक परमानेंट सेटअप है। ऊपर वाला अपना फ्रस्ट्रेशन नीचे वाले पे निकालता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और जो चैनल में सबसे नीचे है वो नुकसान में आ जाता है। फिर वो जाके अपने घर में अपने बच्चों पे भड़ास निकालता है, और इसका भी भयंकर नतीजा उस बच्चे की परवरिश में पड़ता है। और हर चैनल पे किसी न किसी को कुछ ना कुछ परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं, लेकिन जो परेशानी हमने मोल ली है उसकी कीमत हमारा बच्चा क्यों चुकाएगा? हम कितने भी परेशानी में हो, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, अपने स्ट्रेस से फ्री होकर के काम कर सकते हैं। मैडम का कहने का मतलब भी लगभग मेरे हिसाब से यही था। अगर हमको अपना 100% देना है तो हमारा दिमाग 100% फ्री होना चाहिए। दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रईस व्यक्ति वॉरेन बफेट, इस बार शायद चौथे और पांचवें नंबर पर है, बिलियनियर है, बट द आइडिया इज देयर इज नथिंग विद हिम, ही हैज नथिंग, he has a big companies, he took only a single meeting throughout the year, पूरे साल में केवल एक मीटिंग लेते हैं, कितना टारगेट पिछला था इतना था, अचीव कितना किया इतना, आगे का कितना है इतना, बस मीटिंग खत्म। उसके बाद अपने सबऑर्डिनेट्स को बार बार परेशान नहीं करते, ऐसा कैसे हुआ, ये चीज क्यों नहीं हो पाई, वो चीज, अरे यू हैव गिवन अ टास्क टू समवन, बिलीव ऑन दैट, वो करेगा, बेहतरीन करेगा। उसी तरीके से हमारे बच्चे हैं। अपनी एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारी सिस्टर्स हमसे नीचे हैं, और जब कभी जाती थी तो मम्मी तुरंत, नहीं अकेले नहीं जाना, पापा आएंगे तो जाना, या भैया आ जाएंगे तो भैया के साथ जाना। तो हमने मम्मी से कहा जाने क्यों नहीं देते हो? अरे तुम समझते नहीं हो, जमाना बड़ा खराब है। और दिस इज द बेस्ट लाइन 1975 में भी सुनाई जाती होगी, 22 में भी सुनाई जाती है। कैसे नहीं जाना, जमाना बड़ा खराब है। जमाना तो हमेशा से खराब था, हम रेडी थे कि नहीं, दैट इज द मेन थिंग। हमने मम्मी से कहा जाने दीजिए इनको। दे वेंट आउट, विद इन 200 मीटर डिस्टेंस आई फॉलोड देम। 2-3 days आई वेंट, आई केम टू माई मदर एंड आई सेड इट्स ओके, दे कैन गो, वो जा सकते हैं, दैट्स इट। जस्ट कीप एन आई, डोंट इंक्रोच अगेन एंड अगेन, बार बार डिस्टर्बेंस मत क्रिएट कीजिए, उनको थोड़ा फ्रीडम में काम करने दीजिए, नजर बनाए रखिए, लेकिन रूसो की थ्योरी को मानिए, नेचुरलिज्म, बच्चे को नेचुरल तरीके से बड़ा होने दीजिए, हर जगह बैरिकेडिंग्स मत लगाइए। और निश्चित रूप से चाहे पुरुष हो और महिलाएं, मैंने देखा है सक्सेस रेट उन्हीं का ज्यादा है जिनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया है और बैरिकेडिंग्स को मिनिमाइज किया है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच बहुत बेहतरीन लोग हैं जो अपने आप में इंस्पिरेशन हैं, उनको किसी दूसरी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, दे आर सेल्फ इंस्पिरेशंस, दे आर अमंगस्ट अस। आई एम वेरी थैंकफुल from the department of Kendriya Vidyalaya number 1 on behalf of Kendriya Vidyalaya number 1 and Madam Padmini, I am really very thankful कि आज हमारे विद्यालय में ये प्रोग्राम इतने बेहतर तरीके से हुआ, और हमारे दूरदर्शन के मित्र भी हैं और हमारे टीचर्स भी हैं जिन्होंने काफी कोऑपरेट किया, और ये प्रोग्राम अब डिजिटल फुटप्रिंट के रूप में दर्ज भी हो गया है। जब कभी भी अच्छा लगे हम फिर से इसको देख सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू। Thank you, sir. You rightly pointed out about stress-free life, and also Rousseau's statement, man is born free, why should be in chains? So we are almost on the toward the close of this meeting, but before this I would like to quote one Sanskrit slok. Tamaso detah sada pujya, bhushan achadena asnehi, bhuti kamair narair nityam, satkaresu utsavesu cha. That means men who seek welfare should always honor women on festivals with some gifts. So this is the right forum, and as we are proud to have a male member of our head of the family. So how can we forget to provide a token of love to our honorable guest of this morning? So may I now request our principal sir to honor the guest of this morning.
धन्यवाद सर। हमारे प्राचार्य महोदय साथ ही मुख्य अभ्यागता ने भी परवरिश की बात कही। मैं आपको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की ओर ले चलता हूँ। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, जैसे जेकर घर द्वार तेकर तैसन फैका, जैसे जेकर दाई ददा तेकर तैसन लैका। इसका अर्थ है जैसे जेकर घर द्वार तेकर तैसन फैका। फैका मतलब दरवाजा। दरवाजा देख के पता चल जाता है कि घर कैसा है। महल का दरवाजा विशालकाय होगा, झोपड़ी का दरवाजा छोटा टूटा फूटा सा होगा, उसको देख कर पता चल जाता है घर कैसा है। जैसे जेकर दाई दादा तेकर तैसन लैका, उसी प्रकार से बच्चे को देखकर पता चल जाता है कि उसके माता पिता कैसे हैं। अगर माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए तो बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं। जैसे हम शिक्षक साथी, हम सभी शिक्षक शिक्षिका जानते हैं कि कोई भी विद्यार्थी के व्यवहार से हमें पता चल जाता है कि इसके माता या पिता जरूर शिक्षक हैं, जिस ढंग से संस्कार। हालांकि केवल माता पिता के संस्कार नहीं, हमारे आसपास के वातावरण संगति का भी असर पड़ता है, पर जो मूल रूप से संस्कार अपने माता पिता से मिलते हैं वो कभी नहीं जाते। और परवरिश में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके कारण से ही जो बच्चे हैं वो ऊंचाइयों को छू पाते हैं। कार्यक्रम अंतिम पायदान की ओर है और मैं श्री जी.वी. दास जी से निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। दास सर। A very good morning to Honorable Chief Guest, Srimati ANU GARG ji, Additional Chief Secretary, Water Resources Department, Government of Odisha, respected Mrs. Y. Paduni, ex-principal of K.V.NO.1 Bhubaneswar, respected Mr. Bhupendra Singh ji, principal of this Vidyalaya, my dear colleagues and lovely ladies of this Vidyalaya, as well as our beloved students and parents in online mode. At the outset, let me first wish all of you a very happy Women's Day. I am indeed honored to have been entrusted with this responsibility of proposing vote of thanks. First of all, we are extremely thankful to our Honorable Chief Guest, Madam ANU GARG ji, for sparing some time with us in spite of her busy schedule and gracing the occasion. She is an inspiration to all the ladies and the gents, especially in our KV and all over Odisha, no doubt in India. She is also one of the role model for all women and after all, a KVN. So this shows that a KVN can grow to its height. It has no limit. Being a teacher of 30 years in this Vidyalaya KVS family, I have seen many students, they have gone to their different levels and they have become IAS officers, doctors, engineers, pilot, and even. One of the most prominent thing what I found with Madam, she inspired us to be a role model, and it was really, I love it because we are the role model for our country, definitely. And Madam has also indicated that during the teaching learning process, we must inspire our children in such a way. In class 7, I was taking a class where that Sunita Lakra is one of the first engine driver of the railways. We were teaching at that time, students were astonished. And they saw that really a woman can be a train driver. I told them also, woman can do anything. So it is a really proud moment for us. Madam is with us, and we are also thankful to her for her valuable time. And it is the extended time going on. I know it very well. She is so busy. I also express my gratitude to Mrs. Y. Paduni, our most lovely lady,
and ex-principal of this Kendriya Vidyalaya #1, and she expressed her happiness as being a woman. So that is the जिसको कहते हैं हम एक बड़ापन. ठीक है मैडम? Right. Then I also express my sincere thanks to Mrs. Sabita Hota ma'am, for Sanskrit teacher, for reciting such a meaningful poem befitting this occasion. And नारी की भूमिका बहुत बड़ी बात है. एंड सबसे बड़ी बात है कि जो त्रिभाषी में उन्होंने जो बताया, ये एक बहुत अच्छी, जिसको हम लोग कहते हैं कला है, to speak in different languages, and this is only the K.V.Ns can do. Thanks to Ms. Soumya Srimai Panda for her wonderful speech on this occasion, and thanks to the beautiful dancers Divya Mishra, Arpita, Lindsay for their mesmerizing performance in this befitting occasion. I'll fail in my duty if I do not thank the lovely ladies for their soulful rendition. They have really sang a very wonderful song in this particular occasion. My heartfelt thanks to our dynamic, energetic, and vibrant principal for the success of this program, under which guidance we are able to do such type of beautiful and very successful programs in our school. Last but not the least, the press people and the media, the people who are involved in this program, and directly or indirectly, whoever may be, they are very much. And the music teacher of this Kendriya Vidyalaya #1, Mr. Purnachandra Das, who has given his contribution in the music and the dance choreography and everything. So thank you, sir. Once again, I wish you all a happy Women's Day. Thank you, one and all. Thank you. धन्यवाद, धन्यवाद दास जी. नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जन का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो. उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो, हर दिन नारी दिवस मना लो. समस्त शिक्षकों से विनम्र निवेदन है कि वे स्टेज पर एकत्र हों ताकि ग्रुप